Hello, in this particular video, we are going to discuss about time and space complexity. So, time and space complexity is a very important concept to learn because for every algorithm which we write, knowing the time complexity and space complexity for that particular algorithm is very important. Now, before moving on, we will discuss 3 points for this time and space complexity. We will discuss what is time and space complexity. We will discuss why the understanding and why there is a need to know the time and space complexity of a particular algorithm, and then we will discuss that how we can calculate time and space complexity. So first of all, let's there is a particular doubt which students face. Students think that time and space complexity tells us about the total execution time or the total space required for the execution of a particular algorithm. This is what many students think, that the time and space complexity is the examine of the total execution time. उन्हें लगता है कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि एक एल्गोरिथम रन करने में कितना टाइम लेती है, कितना स्पेस लेती है, ये बताता है. बट दिस इज रॉन्ग. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. दिस इज नॉट द right definition of time and space complexity. If we talk about time and space complexity, it gives us the information about the variation, increase or decrease in execution time, the number of operations are changed. So it is basically the relation between the number of operations and the execution time or execution space which is required. Means it tells us about that if we have written a particular algorithm, so for a particular input, what should be the execution time, what should be the expected execution time. It is just a relation between the number of input and the execution time or execution space. Maybe it is quite confusing. Okay, तो जो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमें बताता है, हमें एग्जैक्ट टाइम बताता है, वो हमें कंपेयर करता है कि एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इनपुट के लिए कितना टाइम लग सकता है, उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में कितना स्पेस वो कंज्यूम करेगा. So let's discuss for the given code which is given here. So here I have just taken a for loop and which is starting from 0 and it will work until I is less than 5. So basically this loop will run for 0, 1, 2 and 3 and 4 for this particular number of input, and it will print hello 5 times. So इन सारे input के लिए ये array चलेगी. Now let's say if I will just change this to n. Now this loop is dependent on the number n. जितना n होगा उतनी बार ये particular loop run करेगी. So now the execution time of this particular program for this particular loop is dependent on a variable called n. कि जितना बड़ा n होगा ये for loop उतनी बार ही चलेगी. And this is why time complexity is required. So this is basically that what is time and space complex. हमने एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ली कि वो हमें टोटल टाइम नहीं बताती है, वो हमें एक रिलेशन बताती है, एक वेरिएशन बताती है कि एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए कितना टाइम क्या कंपैरिजन होगा. Now let's discuss more properly that first we will discuss the complete time complexity and then the space complexity. So now let's discuss about the time complexity. So first, let's consider that what is time complexity. Let's understand about it. Time complexity क्या होती है? Time complexity is the amount of time taken by an algorithm. This is the hard definition. Okay, it is a time taken by, but as a function of the length of the input. It is basically a function, a comparison which states the amount of time taken based on the length of the input. So means
if a particular algorithm is taking a particular number amount of input, तो उसके behalf पे क्या time होगा, what is that amount of time algorithm will take, वो बताता है time complexity. Let me just give you an example. As we have discussed the last code which is written here, you can see here you can see that जब हमारा input 5 था, तब we are doing 5 operations from 0, 1, 2, 3, 4. When we have input n, so the time required, or basically the number of times this loop will run, वो depend कर रहा है इस n के ऊपर, and that is why the time is also depending on this n. That is why, and to denote this thing, we need a particular case. So for example, if we have to measure time, we have hours, we have second, we have unit of time. If we have to measure length, we have meter, we have kilometer, unit of length. Similarly, to calculate the complexity of a particular algorithm, we have different notations. So here I have written 3 different notations here, which is big O of n. Sorry, it is big O. We have big theta and we have big omega. These are the 3 different notations which we have basically. Now let's discuss more about that. What are the significance of these particular notations? As I told you, that time complexity क्या बताता हमें कितना time लेगा एक algorithm to run as a function of length of input. Big O, big theta and big omega. एक particular algorithm के 3 cases होते हैं: best case, average case and worst case. Let's take a very simple algorithm which is linear search. बहुत ही simple algorithm है, बहुत ही simple approach है. Let's take that there are some given numbers. Let's say numbers are 1, 2, 3, 4, 5. And we have to search for a particular number. So this is an array of number. ये पूरी एक number है, object है, let's say एक array है numbers की, और उस array में हमें कोई एक number find करना है. अब देखो best case क्या होगा, what will be the best case? The best case will be that you have to search for 1, and वो जो नंबर आप जो सर्च करो आपको पहली बार पे आपको मिल गया. The number you are searching is in the first position only. वो आपको पहली बार में ही मिल गया, तो आपको आगे कहीं देखना ही नहीं पड़ा. That will be the best case. So in that case your complexity will be 1. In that case your complexity will be 1, or you can say constant. We call it constant time complexity. कि वो बेस्ट केस है कि हमारा जो नंबर हम लोग सर्च कर रहे हैं पहली बार में मिल गया. अब वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस हो सकता है मे बी हम लोग 5 के लिए सर्च कर रहे होते हैं. So the worst case can be that we have to iterate the complete array. हमें पूरी array में चेक करना पड़ता है, 1 को, then 2, then 3, then 4, then last में 5 मिलता. ऐसा भी हो सकता था. That might be the scenario, and that is the worst case scenario. So in this worst case, you can see there are 5 numbers, so we are taking at 5. Maybe there are n numbers. So in that case, we have to make n operation. हमें n तक देखना पड़ता. So basically हमें n बार यहाँ पर चलना पड़ता. And the average case is, as the name suggests, the average of the both. So it will be basically n plus 1 by 2. If I ask that for a linear search algorithm, what is the worst case time complexity? You will say O of n, big O of n. Because for writing worst, just like if I am saying that if we are measuring some length, so you will say 2 kilometer, 3 meter. You add a unit with that particular value. Similarly here, this is a notation, this is a unit, which is used to denote the complexity analysis. So you can see here that if someone will ask us about the time complexity for linear search, so for the worst case time complexity, for the worst case, कि वर्स्ट से वर्स्ट कितनी ज्यादा खराब होगी, you will say order of n. इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है. You will compare n values, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा.
order of, or we can say theta n plus 1 by 2. This is the average case. This is the average case कि आपका नंबर बीच में मिल गया है, ऐसा कुछ हो गया. This is called the average case. And the last is, this is called the best case. The best case can be कि आपको पहली बार में ही आपका आंसर मिले, आपको आगे आइटरेट ही ना करना पड़े. Okay, what we consider, we always consider worst case scenario कि खराब से खराब भी कितना टाइम ले लेगा एक एल्गोरिथम. So we have discussed all the three, but later on we will focus more on the worst case scenario. And similar is for the space also. We will discuss later for the space too. तो ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट से वर्स्ट केस में एक एल्गोरिथम कितना वर्स्ट टाइम ले सकता है, वो हम लोग बेसिकली कंसीडर करेंगे. That what is the worst case scenario for a particular algorithm, for a particular time complexity, space complexity. कि भाई एक एल्गोरिथम इससे ज्यादा टाइम तो लेगा ही नहीं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा, इससे कम भले ले ले, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगा. ठीक है, तो ये एक चीज है जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, so let's see for this particular example. If I will ask you that इस particular example के लिए time complexity क्या होगी, so you can see that for this is a linear time complexity program. Why? Because the time complexity or the number of operations basically depend linearly on the number of input. Let's say if n is 1, so only one operation will be there. If n will be 2, तो दो बार प्रिंट कर देगा हेलो को. अगर n 3 होगा तो 3 बार प्रिंट कर देगा. अगर n होगा n बार प्रिंट कर देगा. This is how we find. If someone will ask you what is the time complexity for this code, you will say the time complexity is order of n. The time complexity is order of n. Yeah, big O of n. We say it big O of n. This is big O. So we say it big O of n. This is the time complexity. Let's say, let me just change this code a little bit. Let me just change this code a little bit, okay, that you will get a better understanding what we are trying to do. So let's say that here we will have nested loop. Okay, so nested loop can also be a scenario. So let's take, we have another for loop here. Let j is equal to 0 and j is less than j plus plus. Okay, so this can be this also can be a scenario. Okay, let me just write this program. In this case, what we will do? What we will do in this particular case? So for this particular case, you can see one thing, that we are having nested loops. So you can see that for each value of n, हमारे पास एक और for loop है जो basically m times चल रही है. So overall कितने operations हो रहे हैं? Overall you can see that let's say if n is 1, तो m operations will be. अगर n 1 होगा तो हमारी सिर्फ अंदर लूप चलेगी and that will make m operations. If n will be 2, so 2 into m operations will be done. If n is 3, so 3 into m operations will be done. Similarly, if n is there, so n into m operations will be done. If you will ask me about the time complexity of this, I will say you big O of n into m. It will be big O of n into m. This will be the time complexity for this particular approach. So इस तरीके से हमारे पास हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. This will be the approach. Now we will discuss different types of time complexity. हम लोग समझेंगे and then we will also take some examples how we can calculate time complexity for a particular given program. Now let's talk about different time complexities.
So first we have constant time. So if we talk about constant time, let's understand it with the help of an example. You can see that there is a code given to us where I have taken a for loop which is starting from 0 and is going up to 5. You can see that this particular loop is not dependent on any variable. ये लूप हमेशा 5 बार चलेगी for the values of 0, 1, 2, 3 and 4. I की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 के लिए लूप चलेगी. कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी प्रिंट करो, दिस लूप विल ऑलवेज रन 5 टाइम. ये किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. And that is why the time complexity of this particular loop is O of n. This will always be order of 1 only. इसको हम लोग बोलेंगे that it is a constant time complexity algorithm. Now let's talk about linear time complexity. We have discussed about it, but then also let's discuss more about it. That what is this particular type of algorithm. You can see one thing, if I will replace this 5 to n. So you can see that this program will run up to n minus 1. तो ये प्रोग्राम बेसिकली n minus 1 तक मतलब बेसिकली n बार हेलो प्रिंट करेगा. इन दैट केस द सिनेरियो विल बी दैट हमारे जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं एंड बेसिकली हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या है. तो इन दिस केस अगर n 1 होगा तो एक बार ऑपरेशन होगा, n 2 होगा दो बार ऑपरेशन होगा. तो जितना n होगा उस हिसाब से हमारा टाइम डिपेंड कर रहा है. So the time complexity is said to be linear time, order of n. Now let's talk about logarithmic time. Logarithmic time complexity is something which is going to be important. Let's say I have written here I is equal to I into 2. And let's start it from 1 and go till n. Let's take an example, and through that example let's understand this particular approach. You can see that when the value of n will be 16, so I will start from 0. Oh, sorry, I will start from 1. You can see in the program, I हमारा 1 से शुरू हो रहा है, उसने पहले hello print किया. After that we are multiplying 2 to I. अब वो I क्या हो गया? I हो गया 2. Again it will print hello. इसके बाद I हो गया 4. Again it will print hello. After that I will become 8. Again it will print hello. After that I will become 16. Again it will print hello. After that I will become 32. From now here the operation will be stopped because here I have written condition I should be less than equal to n. So basically you can see that 5 बार hello for n is equal to 16. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमारा जो I था वो हर बार 2 से मल्टीप्लाई, तो वो तब तक ही चला जब तक जो I है हमारा वो n से छोटा रहा. ओके, तो बेसिकली 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा था बार बार. तो लेट्स से कि ये 2 का मल्टीप्लीकेशन k टाइम्स हुआ. लेट्स से तो बेसिकली जब तक हमारा 2 टू द पावर k n के इक्वल था तब तक ये चीज हुई. लेट्स टेक लॉग. इस पर्टिकुलर इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग लेते हैं. इट विल बी लॉग ऑफ 2 टू द पावर k. लॉग बेस 2 लेना है, ठीक है. Here it will be log base 2 power n. ओके, सिमिलरली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है आपकी लॉग की, a will be here log base 2 will be equal to log base 2n. This will be equal to 1. So it will be k is equal to log base 2n. तो आप देख सकते हो कि यहाँ कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं. यहाँ बेसिकली log n operations हो, log base to the power n operations. And this is how this type of time complexities occur. जब आपके एक पर्टिकुलर गिवन इनपुट के लिए log n ऑपरेशंस हो रहे हो. ओके,
This is called the logarithmic time complexity. Similarly, we have the quadratic time complexity. Let's say कि मैं यहाँ पे n into n लिख दूं, तो अब ये जो I है ये n into n बार चलेगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n into n होगी। अगर मैं n into n into n लिख दूं तो ये इस तरीके से चलेगा। और देयर कैन ऑल्सो बी अ केस कि अगर मैं यहाँ पर नेस्टेड लूप्स ले लूँ, तो व्हाट आई कैन डू, मैं इसको हटा करके आई कैन टेक अनदर फॉर लूप लाइक दिस, एंड यहाँ पर मैं अब अगर चलो तो ये लूप भी n बार चलेगी और ये लूप भी n बार चलेगी, तो बेसिकली ओवरऑल n इंटू n टाइम्स ये पर्टिकुलर लूप चलेंगी। इस तरीके से भी हमारे पास क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। आई हैव रिटन सम इंपॉर्टेंट वंस हियर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरीके से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्स कितना चलेगी। नाउ लेट्स कंपेयर दिस टाइम कॉम्प्लेक्स। Comparison is very important. Let's take input here. Let's take a time complexity of order of n. First, before order of n, let's take one for order of 1, then order of n, then order of log n, then order of n square, then order of n cube. Let's say n is 1. n 1 होगा जब, तो order of 1 तो हमेशा एक बार ही चलेगा. It will always be constant. एक बार चलेगा, basically constant बार चलेगा. Other is, अगर n 1 होगा तो order of n एक बार ही चलेगा. Log of n भी 1 ही होगा. और बेसिकली 0 भी हो सकता है. ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा. लेट्स से अगर n हमारा 2 हुआ, तो ये तो 1 ही रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा. अगर हमारा n 10 हुआ, तो ये 1 ही रहेगा, ये 10 हो जाएगा, ये इट विल बी समथिंग अप्रॉक्स 3, इट विल बी 100, इट विल बी 1000. तो दिस इज हाउ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्क्स. आप देख सकते हो, ये कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये n के साथ बढ़ रही है. n 10 हुआ, नंबर ऑफ ऑपरेशन 10 हो गया. ये log n के हिसाब से चल रही है. n स्क्वायर, n 10 हुआ तो वो 100 हो गई, और यहाँ n 10 हुआ वो 1000 हो गई. वो और ज्यादा क्वाड्रेटिक है. ओके, तो इस तरीके से हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्क करती है. नाउ वी विल डिस्कस ऑल दीज complexities, all these scenario with the help of a chart also. We will discuss the help of a chart. Okay, but before going to that, we will also discuss a property of time and space complex. The property is that constants are never been taken. Constants are never been taken. Let me just again change everything to a single. You can see that this is a order of n time complexity. हमने सिर्फ एक लूप लिया है जो कि n बार चल रहा है. मान लो मैं ऐसे 3 लूप यहाँ पे लिख दूं, एंड अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो यू विल से सर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर विल बी 3 into n, क्योंकि 3 बार चल रही है लूप. So you will say the time complexity will go of 3n. But no, we never consider constant in the time complexity notation. So this order of 3n will be written as order of n only. इसको हम लोग order of n ही मानेंगे जब तक यहाँ पर कोई वेरिएबल ना आ जाए. अगर यहाँ पे n into m होता तो हम लोग n into m मानते. सिमिलरली लेट्स से कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने लिखा ऑर्डर ऑफ n plus 5, वो हम लोग उसको ऑर्डर ऑफ n ही मानेंगे. कुछ भी हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, पर हम लोग कोई भी कांस्टेंट को प्रेफर नहीं करते हैं. ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n विल बेसिकली बी ऑर्डर ऑफ n ओनली. बट लेट्स से कि यहाँ पर कोई एक लूप n स्क्वायर होगी, तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ n की पहली लूप है ये वाली, दूसरी वाली आपकी आ गई ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर की, और तीसरी वाली फिर से ऑर्डर ऑफ n की है. तो अब इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर हम लोग जो सबसे मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हम लोग कंसिडर करते हैं. जो सबसे ज़्यादा
मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा स्लो होती है, वो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। हम लोग ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर को ले लेंगे। दैट विल बी द फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम। कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी है, कौन सी कम है, कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कौन कम कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने के लिए हम लोग अभी आगे एक ग्राफ की हेल्प से इसको समझते हैं। Here you can see we are provided with the charts of these different time complexes. So you can see that here we have length of data and here we have number of operations to perform. You can see that for order of 1, for a constant time complexity, whatever is the length of data, length का data कुछ भी हो, data का length कुछ भी हो, आपके number of operations हमेशा constant। मैंने बोला था ना कि अगर हमारे पास एक normal यहाँ पर loop है where we are having from 0 to 5, so this loop will always run for 5 times। कुछ भी input हो, कुछ भी print करना हो, that doesn't matter। Now we have order of n, which is the linear time complex। It is just like a line x is equal to y axis line। जितना input होगा उतने ही operations होंगे। It is basically just directly proportional to the number of input। We have n square quadratic। It is dependent on the input, that if we have input 2, so we are having 4 operations। If we have input 4, we are having 16 operations। We have the log n time complexity also, as I told you, that for n operations we are having, for n input we are having log n operations, which is considered to be base 2 most of the cases in programming। So अगर आप इन सबको कंपेयर करो, you can see out of these all the time complexities, सारे ग्राफ ऊपर जा रहे हैं, सारे ग्राफ ऊपर। अगर मैं इन सबको एक जगह पे ले आऊं, if I will just take all the graph at once, you can see one thing, that this is the graph of constant, this is the graph of n square, and this is the graph of log n। This is log n, this is n square, this is order of n। The graph which is going just apart, सबसे ऊपर जा रहा है, वो है O of n square। O of 1 हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा, ऊपर नहीं जा रहा है, वो सबसे छोटा होगा। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर ऑफ n, log n, sorry, we have log n, then we have order of n, and then उसके बाद order of n cube, n to the power 4, 2 to the power n, अलग अलग और भी कॉम्प्लेक्स टाइम कॉम्प्लेक्सेस होती हैं। इस तरीके से हम लोग आपस में भी कि कौन सी एल्गोरिथम अच्छी है, कौन सी एल्गोरिथम कम अच्छी है, वी कैन जस्ट कंपेयर। सो जब आप लोग कोड करेंगे, व्हेन यू विल कोड अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम, देयर आर डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बट आप हमेशा ट्राई करेंगे कि आप कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले अप्रोच को चूज करें। अगर एक प्रॉब्लम o टू द पावर n स्क्वायर में भी हो रही, सॉरी, बिग O ऑफ n स्क्वायर में भी हो रही है और बिग O ऑफ n में भी हो रही है, तो आप पहले बिग O ऑफ n वाला सॉल्यूशन ट्राई करेंगे, बिकॉज दैट इज मोर एफिशिएंट। बिकॉज व्हाट वी वांट, हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हमारा कोई भी चीज हो, हमारा कोई भी काम हो, वो जल्दी टाइम में हो जाए, कम टाइम में हो जाए और कम स्पेस ले। एंड दैट इज व्हाट वी वांट फॉर एल्गोरिथम आल्सो। दिस इज हाउ वी कैन जस्ट कंपेयर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। So as we have talked about time complexity, now it's for the space complexity। टाइम कॉम्प्लेक्स में हमने पढ़ा कैसे हम लोग एक पर्टिकुलर गिवन इनपुट से पता लगाते हैं कि एक एल्गोरिथम को रन करने में कितना टाइम लगता है। इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज of an algorithm is the amount of memory space required to solve the particular computational problem. But it doesn't tell us the exact amount. It tells us as the function of characteristics of the input. It is again dependent on the input. So complexity is basically dependent how the program is working. If it is dependent on the input, then the complexity is also dependent. So for time complexity also, it basically not tells us about the exact time। वो हमें बताता है कि एक particular input के लिए, let's say that if, let's assume that this is the scenario, might be the scenario that if n is 1, अगर हम let's say we are storing one song,
हम अगर एक सॉन्ग स्टोर कर रहे हैं हमारे मेमोरी कार्ड में, एक सॉन्ग हमारा 5 MB का है, लेट्स से हम लोग 2 सॉन्ग स्टोर कर रहे हैं, तो दूसरा सॉन्ग हमारा 5 और MB, 10 MB लग जाएगा। लेट्स से 4 सॉन्ग्स हैं तो 20 MB हो जाएगा। ओके, लेट्स से 100 सॉन्ग्स हैं तो 500 MB हो जाएगा। So it depends on the number of songs. Okay, just like we have operations, here we have space. This was just an example which I was checking. Just like in time complexity, we have constant space, constant time, linear time. Here also we have constant space, linear space things. And here we also use the big O notation, sigma O notation, the theta O notation to basically denote the worst case space complexity, the average case space complexity, and the best case space complexity. But in the case, it is not like the time complexity. Time complexity के यहाँ पर ऐसा केस नहीं होता है कि best case, average case. Here we just have the space complexity. Because एक particular program में कितनी space जो कितने हम लोग variables initialize करेंगे वो fixed रहता है, वो नहीं change होता है. Sometimes when there are variable memory allocation, हम लोग variable size के arrays लेते हैं, just like in JavaScript we take, तब वहाँ पर ये चीज़ vary करती है. Let's take कि हमारे पास इस तरीके से एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, हम उन दोनों को ऐड कर रहे हैं. लेट्स टेक अ सम हियर. तो यू विल सी कि ए की कुछ भी वैल्यू, बी की कुछ भी वैल्यू हो, ऑन दैट पर्टिकुलर वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की मेमोरी में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसकी मेमोरी हमेशा सेम रहेगी. वी आर जस्ट डिक्लेयरिंग 3 वेरिएबल्स ए, बी एंड सम. दिस इज अ ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्स. Because कुछ भी वैल्यू ए और बी की, it is not dependent on the space complex. The space complex not dependent on the value of any variable. So this is the constant space complexity. Now let's say that here we have taken a array. So let's say we are taking const arr. Okay, and let's say that we have a for loop from 0 to, let's say there is a something n given to us. And for each value of it, we are assigning some value. Let's say like this. This is all is happening. Here you can see that we are building a array of size n. हम लोग एक n size के array को build कर रहे हैं. तो जितना n होगा उतनी ही हमारी size की array भी build होगी. So in this case, the space complexity will be order of n. जैसे हम लोगों ने time के लिए पढ़ा वैसे हम लोग space के लिए. अगर हमारी कोई भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सिटी इनपुट पे डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स हम उस इनपुट का जो रिलेशन होगा उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ बिग ओ ऑफ एन के अंदर लेंगे, बिग ओ ऑफ के अंदर. एंड दिस इज हाउ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो वर्क्स. मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया. तो इस तरीके से हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स है उसको देखते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम आपको उस प्रोग्राम में क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, आप कोई भी चीज का यूज करते हो आप पहले पता लगाते हो कितना टाइम लगेगा, कितनी स्पेस लगेगी. दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ऑल्सो. फॉर अ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सिटी इट्स टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स और हम लोग उन प्रॉब्लम्स की हेल्प से डिस्कस करें कैसे हम लोग उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं. So let's discuss some examples or let's discuss to find the time and space complexity for that particular codes. So now let's discuss the whole concept with the help of this particular chart. You can see here that here the particular charts for different time complexities given. अगर input size n होगा, so for that input size n, for different time complexities, what will be the big O function? What will be our big O function? That is what given to us. You can see here for the constant time complexity, it is just O of n, O of 1, sorry. For the linear time complexity, it is order of n.
order of log n, order of n log n, order of n to the power c. So this c can be n square, n cube, n to the power 4. Basically, this all will lie in this particular region only. We have c to the power n, let's say 2 to the power n, 3 to the power n. This type of exponential time complexes are there. We have factorial time complex. इन सबका आपको देखो यहाँ पर रिलेशन दिया गया है. You can see here it is written that the worst case scenario is कि आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्स थी वो फैक्टोरियल हो, टाइम कॉम्प्लेक्स थी आपकी एक्सपोनेंशियल हो. एंड बहुत ही वर्स्ट केस में ही ऐसा होता है. अदर केसेस द टाइम कॉम्प्लेक्स इज n log n. मैंने आपको बताया that how order of n the linear time complex थी, we have logarithmic time complex थी, we have constant time complex थी. सबसे बेस्ट होती है constant time complex because it is not dependent on the input. कुछ भी input हो, the program will do its own work. Input कुछ भी हो, it doesn't mean. Let's take the example. Let's say कि यहाँ पर we have this console log. Let's have this console log and let's remove this for loop. Let's say there is a number, let's say integer n is equal to 2. And we are basically printing the value of this n. You can see here one thing, कि n की वैल्यू कुछ भी हो, whatever is the value of n, ये console log जो है हमेशा n की वैल्यू प्रिंट करेगा एक बार. So this will run only one time. Only one time. n की कुछ भी वैल्यू हो, ये console.log आपका हमेशा एक बार चलेगा. इसका मतलब इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्स थी वो बिग ऑफ 1. n की कुछ भी वैल्यू ये हमेशा एक बार चलेगा. पर लेट्स से कि हमें यहाँ पर ऐसे लेना होता, हमें 1 से लेके n तक के सारे नंबर्स प्रिंट करने होते. इस केस में हम लोग क्या करते, तो हमें ऐसे करके लेना पड़ता, इस तरीके से हमें करना पड़ता. एंड इन दिस केस यू कैन सी हमारी जो हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन है, हमारा जो प्रिंट है वो n के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अगर हमारा जितनी बार n होगा उतनी बार हमारी जो है वो प्रिंट करेगी, प्रिंट होगा हमारा नंबर. तो इट विल प्रिंट n टाइम्स, ये जो है n टाइम्स प्रिंट करेगी. So the complexity will be order of n. This is how this thing works. हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि we solve our problem with the best time complex, which is the constant. अगर उससे नहीं हो रही है तो good पे जाओ, means log n पे जाओ, then n पे जाओ, then n log n पे जाओ. This is how the case works. Let's understand it with the example. Okay? Let's say कि हमें बोला गया हो we have to find sum of first n natural numbers. Sum of first and natural number means 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n. In this case, what we will do, first of all, let's take a variable sum. And आप क्या करोगे, आप 1 से n तक पूरा आइट्रेट करोगे, एक लूप चलाओगे and उन वैल्यूज को आप अपने सम में ऐड कर दो. This is what you will do. You will just take a loop from 1 to n and you will add it to the sum variable, the sum which is given to you. And that will take order of n. Okay? So this will take order of n time complex. But as I told you, you have to always try कि आप अपने प्रोग्राम को जितना कम हो सके उतने टाइम में सॉल्व करो. Because we have to save time, we have to save space, we have to save time. So you will try कि इसको और जल्दी सॉल्व करें. There is a mathematical formula which tells us that the sum of first n natural numbers is n into n plus 1 by 2. अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दूं कि let sum is equal to n into n plus 1 by 2, तो क्या होगा? In this case, it will just give us the final sum, the sum of first n natural numbers. This can also be the scenario. For this case, it will be order of 1. So we always try to solve our problem with less time complexity and with less space complexity.
हम हमेशा चाहेंगे कि अगर हमारा प्रोग्राम एक प्रोग्राम ऑर्डर ऑफ एन में हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में हो रहा है, हम लोग उसको कैसे नीचे ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ऑर्डर ऑफ वन में कर पाए. So we always find the optimized solution. When you will prepare for interviews, interview will ask you the time complexity of your approach. And you have to think of the best approach, the most optimized approach, which has the less time complexity. So this is the complete for how this works. For better understanding, we will take some more example to understand this time complexity thing and then space complexity, the complete complexity analysis of a particular algorithm. Now, let's understand that how we can find the time complexity of the given function of the given program. Here you can see that we are given with a array, and here we are finding the sum of that particular array. So for finding the sum, what we are doing, we are taking a for loop and we are iterating to that particular complete array given to us. तो हम लोग उस complete array पे iterate कर रहे हैं. Let's say that this array is not given to us and the size of that array is not fixed. We are just provided with the function and we have to find the time complexity and space complexity for this particular approach. So as we are taking an array, so for that array, the space complexity will be order of n because we are taking a array of n elements, so it will be order of n. And for finding the sum also, we are just iterating through all the n elements. If let's say we are considering that the length of the array means the elements in the array are basically n, it will be also n. So for this case, the space complexity is also n, and because we are just taking a for loop from 0 till n, the so the time complexity is also big O of n. We can say order of n. This is a very simple, very basic code template where we discuss the space complexity and time complexity. Now let's move to the another one. This is the second example. This is basically the implementation of binary search algorithm. And we will discuss that how we can find the time complexity of binary search algorithm. You can see that here we are given with a particular array and we are given a value. Now we are having two variables, start, which is currently 0, and end, which is currently equal to, let's say that length of array is n. So we are having start 0 and end n minus 1. I always say that we have to relate between the input given to us and the number of operations which we are doing. That will tell us the time complexity. As I told you that when n is 1, so one operation was done. If n was 2, then 2 operations is done. If n was n, then n operation was done. That means it is a linear time complexity. Let's say the case is that if n is 1, one operation is done. If n is 2, 4 operations are doing. If n is 3, then 9 operations are doing. That means that is it is O of order of n square time complexity. It depends on n only, the input given to us and the number of operations. That is what you have to check. So let's take in this what we have in this binary search what we have. Each time we find a middle. For middle, we basically divide start with n, and after that we change the pointer of start and end. So in binary search, in each iteration, you will understand binary search later in the upcoming videos. बाइनरी सर्च होती क्या है, अभी हम लोग बस इतना समझेंगे बाइनरी सर्च जो होती है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करें. So what do we do in binary search? Let's say we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is the array that we have. इस array में let's say हमें कोई number find. So what binary search does, it compares it with the middle number. उसके according वो पार्ट डिवाइड करती है एरे को. So, अगर पहले एरे की लेंथ 9 है, then in the next iteration it will become 4, then it will become 2, then it will become 1. इस तरीके से वो हाफ कर करके पूरे एल्गोरिथम को प्रोसेस कर.
एज आई टोल्ड यू दैट हम लोग जब भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू कि जब हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने लिया था, लेट मी फर्स्ट इरेज दीज थिंग्स, वी हैव डन दिस थिंग कि हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से चीजें ली थी, when we are multiplying I by 2. In that case, it is taking order of log n. Order of log n base 2 times. Cannot write it like base 2, okay? This was the time it was taking, okay? Similarly, there are different time complexity. Now let's say that similarly we can also do one more thing, that we can start from n, or we can take a while loop also, that while I is greater than 0. And let's say initially this I is n. And in each step we can write I is equal to I by 2. तो हर एक आइटरेशन के बाद में I की वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी. Then also at the last it will take order of log n. That is what यहाँ पर हो रहा है. यहाँ पर यही हो रहा है. अगर हम लोग उसको डिवाइड बाई 3 करेंगे तो इट विल बी बेस 3. सिमिलरली जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे इट विल बी बेस 3. दीज आर सम वेरी बेसिक थिंग्स जो आपको समझना है यहाँ पर कि किस तरीके से हमारे एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए किस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं, किस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन. हम लोग किस तरीके से एक पर्टिकुलर अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं. Now we will conclude everything that we have understand in this particular video. हमने पढ़ा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है. We have discussed that time and space complexity doesn't tells us the total execution time of an algorithm. वो हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता है. वो हमें बताता है that for the given particular information, for the given number of inputs, for the given number of variables, हमारे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑपरेशन हमें कितना टाइम लग रहा है, कितनी स्पेस हमारी कंज्यूम हो रही है. It gives us the information about the variation in execution time or execution space when number of operations are changed, or basically the input is changed. Input, so the number of operations are dependent on the input of a program, and the complexity is dependent on the number of operations. So overall, the time and space complexity depends on the input of a particular program. Whatever is the input, based on that, we have a time complexity and a space complexity for a particular program. But it doesn't tell us about the exact execution time or the total execution time for a particular program. If we talk about more precisely about the time complexity, then we have discussed that time complexity is defined as the amount of time taken by an algorithm to run. It doesn't tell us the exact time, it is as a function of the length of the input. So time complexity is basically gives us a function which basically takes the length of the input, and then according that gives us the time taken by an algorithm to run. We have three different notations. We have big O notation, we have big theta notation, we have big omega notation. Big O notation denotes the worst case कि worst से worst, खराब से खराब कितना ज्यादा टाइम लगेगा हमारे एल्गोरिथम को काम करने में. बेस्ट केस हमें सबसे बेस्ट केस बताता है कि बहुत अच्छा होगा तब कितना लगेगा. एवरेज दोनों का एवरेज होता है. जैसे मैंने लीनियर सर्च का एग्जांपल लिया कि हमारे पास एक n नंबर्स हैं, n नंबर्स के एरे हैं, उसमें हमें किसी एक नंबर्स को सर्च करना है. तो उस एक नंबर को सर्च करने पे हो सकता है वो नंबर पहले इंडेक्स पे मिल जाए, तो हमें सिर्फ एक ऑपरेशन करना पड़ा. हो सकता है हमें पूरी एरे तक आखिरी तक जाना पड़े, आखिरी इंडेक्स पे वो मिले, तो हमें n ऑपरेशन करने पड़ेंगे. और एवरेज होगा इन दोनों का एवरेज n+1/2. इस तरीके से हमारे वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस आते हैं. लीनियर सर्च एल्गोरिथम जो होती है, लीनियर सर्च बहुत जरूरी होती है. लीनियर सर्च के थ्रू हम लोगों ने तीनों चीजों को समझा. वर्स्ट केस क्या होते हैं, एवरेज केस और बेस्ट केस क्या होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं. एज आई टोल्ड यू कि हमें कंपेयर करना होता है दैट फॉर अ गिवन इनपुट कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं. अगर हमारा n1 है और उसके लिए एक ऑपरेशन हो रहे हैं, तो बेसिकली n2 के लिए दो ऑपरेशन हो रहे हैं, n3 के लिए तीन ऑपरेशन, मतलब वो लीनियरली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली n के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा पर्टिकुलर कोड. इसी तरीके से हम वी हैव डिस्कस किस तरीके से हम लोग log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओमेगा ऑफ n, बिग O ऑफ n, बिग
of big O, log n big O n square big O n क्यूब ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, इस तरीके से हम लोग किस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्स आपस में कंपेयर कर सकते हैं. That is what also we have discussed. Okay, we have discussed how constant doesn't affect a particular time complexity. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका. That let's say कि हमारे पास एक for loop है. Let's say this is the case कि हमारे पास एक for loop है and that for loop is something like this. We are printing high. Let's say we take another for loop and ये हमारा 3 बार ही ऑपरेट कर रही है. So you may say me that, sir, for this particular operation, there are two for loop. The time complex for this is order of n, and it is running 3 times, so it is order of 3. No, first of all, we don't take constant. This is basically the order of 1 only. This is order of 1 only. And also, if we take these both as a single program, so you may say that, sir, the time complex will be order of n plus 1. But this will also not the case. We ignore these constants. It will be order of n only. We take the highest time complex. Similarly, let's say that the highest of these two were order of n. Order of n will be taken as the time complexity of this particular. If here we have n into n, so order of n into n, order of n square will be considered as the time complex. This is how it works. Then we have compared all the time complexity कौन सी best होती है कौन सी worst case की होती है. We have discussed it using the chart at which time complexity is best, which time complexity is worst. We also discussed about space complexity. It tells us about the amount of memory space required to solve a particular problem as a function of characteristics of input. So in both the cases, in time complexity also, in space complexity also, it is working as a function with the given input. It does not tells us the exact amount of memory or the exact amount of time required or taken in the time of execution. It is working as a function between the input and the particular complex. We have different types of complexities for space also, for time also. We have discussed about this particular graph कि कैसे आपस में सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज डिफर करती हैं, कौन सी बेस्ट होती है कौन सी वर्स्ट होती है. This is also we have discussed. We have discussed how to solve a particular problem. Some of first and natural number, they are different ways, but we have to solve it using the most effective way. हम लूप के थ्रू भी कर सकते हैं, दैट विल टेक ऑर्डर ऑफ n. हम नॉर्मल फंक्शन लगाएंगे तो वो लेगा ऑर्डर ऑफ 1. तो वी विल ट्राई फॉर द मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच जो कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगी. एंड देन वी हैव डिस्कस सम टू डिफरेंट प्रोग्राम जिसकी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस किया एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. So this is how the time complexity and space complexity works for a particular